So good afternoon to all the learners. So today we'll be starting your political science paper 2, that is BPSC 132. We'll be having one new counselor with us. She is very perfect in your topics, courses given in your syllabus, and I'm sure all learners will enjoy her discussion, counseling during these 6 days. So once again wishing you a happy time during all these 6 classes of BPSC 132 for next 6 days. So now I hand over this platform to our new counselor of political science, Mrs. Munmun Sen. Madam, please. Thank you, sir. Good evening, viewers. So, I'm Munmun Sen, and today I'm going to discuss about your three topics, that is liberalism and Marxism and Gandhism. So, let's start because we have limited of time. That's why we will start our topic. So, today we first discuss about liberalism. Then, what is liberalism? So, in order to understand about politics and political institutions, we must go through about different approaches and perspectives. And the approaches are liberalism, Marxism, and Gandhism. So, first we discuss about liberalism. What is liberalism? Here, liberal approaches of politics is viewed in terms of political structures and political process and political system. That means liberalism here indicate or given importance to political system or political structures or political process, okay, not to the state. Okay, liberal perspective prefers to use political system in place of the state. That means liberal perspectives or liberal approaches give importance to the state, give importance to the political institution, not to the state. Okay, according to liberalist, the state is a necessary evil. That means state is necessary, but in spite necessary, they compare state is a evil, okay, or devil. According to liberalism, it mainly given importance to freedom, whether it is freedom of individual, community, or group. That means in individual liberalist approach given importance to the liberty or freedom of the individual, freedom of the community, and freedom of the group. The liberalists criticize hierarchical and privileged authority and monarchy in England and Europe because they wanted to achieve liberty of the individual or freedom of the individual and challenge the authority of the state. That means liberal approaches always they always criticize state or coercive power or excessive authoritarian power of the state. Okay, we start liberal concept a broad phenomena. Okay, liberalism is a principle of politics which insists on liberty of individual as the first and foremost goal of public policy. Liberty in this sense implies liberation from restraints, particularly from the restraints imposed by an authoritarian state. That means any type of restriction or any type of restriction provided by state to the individual, liberally strictly oppose that thing. माने होची कि कोनोसी जिनस कोनोसी क्षेत्र रे जदि स्टेट तार एक्सेसिव पावर को यूज करंती, जदि तार फोर्सिव पावर को यूज करंती कोथरे इंडिविजुअल रो फ्रीडम एन्जॉय करिबारे ताकू लिबरलिज्म कोन करंती स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करंती. ओके, this principle was evolved in the west in last 17th century, okay, in order to liquidate feudal privileges of the landholding classes and to create favorable conditions for the new entrepreneurial classes to enable them to contribute to social prospects. Okay, let's we discuss about some phenomena or some features of liberal perspectives or liberal approaches to the study of political systems. Okay, in fact, liberalism is not a fixed mode of thought, but an intellectual movement which seeks to accommodate new ideas in order to face new situations and new challenges. However, its basic trends
may be identified as, maybe you note down the points, okay. Man is a rational creature. He has immense potential to contribute to social progress as well as to his own group. Okay. Then there is no basic contradictions between an individual self-interest and the common interest of society. In fact, the common interest denotes a point of reconciliations between the diverse interests of different individuals. Man is endowed with certain natural rights which cannot be transgressed by any authority. The next, civil society artificial institutions created by individuals to serve the common interest. They are entitled to demand obedience from individuals on the condition of fulfilling the functions. Okay. The next one, liberalism believes in the primacy of procedure over the end product. Okay. It means if the producers for arriving at a decision is right, the decisions may be accepted to be right. The decisions may be accepted to be right. Okay. Liberal view of freedom, equality, justice, and democracy in a search for right procedures in different spheres of social life. Okay. Liberalism again promotes what? Civil liberty to the individuals, including freedom of thought and expression, freedom of association and movement, personal freedom, and strict compliance with legal and judicial procedure. Okay, any restrictions on individual freedom should be meant to ensure equal freedom for others. The next point is your liberal affords freedom of contract. No individual can accept any obligation without his own consent and without considerations of mutual benefit. The state would function as a umpire in the enforcement of contracts. However, a contract concluded under pressure or the one which comprises dignity of the individual shall be void. And finally, last one is, and last important features of liberalism is, liberalism holds that public policy should be the product of free bargaining between groups of individuals formed to pursue their specific interests. So these are the basic features of liberalism. So it indicates that liberalism given importance to two basic important things. The one is it always restricted coercive power of the state or authoritarian power of the state, and next feature is it always give importance to the freedom or liberty of the individual or community or group. It always try to given more importance to the freedom of the individual and to the community as well as to the group also. Okay. Then next we just shortly discuss about who are the co-founders of liberalist approach or classical liberalist approach. So the early exponent of liberalism includes John Locke. John Locke is the father of liberalist approach. Okay. Then your liberalist approach also known as classical liberalism or negative liberalism also. Okay. Adam Smith and Jeremy Bentham, all of them were English philosophers. Locke is known as the father of liberalist approach. Okay. Smith is known as the father of economics, and Bentham is known as father of utilitarianism. Both are the followers, or both accepted the liberalistic approach to the study of political society. Yes, is there any problem? Okay, then we'll go to discuss about what are the different or what are the basic features or basic elements of liberalistic approach, or what are the core elements of liberalistic approach. First one is institutions. Institutions give an importance to the political system, not the state. Okay, so that means they also previously I already discussed that liberalists always give importance to the political system
or political structures or political process not given importance to the state or coercive power of the state or authoritarian power of the state. Okay, so we discuss about different political structures of liberalistic approach. Okay, liberalists prefer to use the term political system rather than the state for quality of a country. Then what is political system? Well, what is the meaning of political system and how political system work, how political system functions? The system consists of a certain institutions or structures such as caste, language, religion, region, tribe, etc. While interacting with each other, they perform certain functions, and during their interaction, certain process occurs like conflict and cooperation and reach a consensus. Political institutions generally include political parties, pressure group, legislature, and executive. But liberalism does not give any importance to the state. Here, they give importance to the what? Political structures, political system, and political process. Okay. Then we next one. Then our next one, that means तामाने हम कहे कले पॉलिटिकल एडी टोटल ओवरऑली हमको या बुझिया को मिलु छि कि जे लिबरलिस्ट अप्रोच सब बेले को जिन सब को ऑर्गेनाइजेशन गुडा को इंपोर्टेंट देले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल सिस्टम नेक्स्ट मु आसी भी बुझेबी कि पॉलिटिकल सिस्टम कोठु आसिला एवं किए तांकर फाउंडर अटंती और पॉलिटिकल सिस्टम ता केमिटिया काम करछि सेटा भी नेक्स्ट मु आसी नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा कि व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर होची हम नेक्स्ट फोर फीचर होची process. What is the process of liberalistic approach? Process indicates the functions which are performed by different institutions and organizations. तामाने होची process सदा बेले केमते काम करची प्रोसेस केमते फंक्शंस करची कहा को नेकी फंक्शंस काम करची किछि इंस्टीट्यूशंस और किछि ऑर्गेनाइजेशंस को नेकी प्रोसेस करची काम करची देयर आर कांसेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन interest articulations and interest aggregation. What is interest articulation? Interest articulations is interest group means pressure group or interest group, and interest aggregation is political parties. तो एई मानु को नै कि कोन करे पॉलिटिकल सिस्टम ता काम करूची जेमते कि हमरो पॉलिटिकल प्रोसेस केमिति होउची गोटे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भितरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भितरे किछि हमरो पॉलिटिकल पार्टीज हे गले किछि हमरो इंटरेस्ट ग्रुप रो मेंबर हेले किछि प्रेशर ग्रुप रो मेंबर हेले एमाने कोन करूछंती कोनसी फीचर्स को से माने काम रे लगाउछंती तो दैट इज द मेन another important elements of liberalistic approach. Liberalists also refer to progress of democracy. That means they also give an importance to democratic principles. Okay, why they give an importance to democratic principles? Because in democratic principle they individual enjoy maximum freedom to choose their authority. Okay, that's why liberalists also give an importance to democratic features. Okay, the liberalist approach view politicizations of people as democratization through electoral mobilization and political participation, which directly move towards liberty. That means when we take political participation or when we take participants in election, that means what? We enjoy our rights. If people enjoy their rights, that indicate what? That indicate that they enjoy their maximum freedom. That means that is also indirectly or directly promote liberalist approach. The next four important elements is values. Okay, this is the third one. It indicates liberty, human rights, and equalities. Again, it's given importance to which value things. Valuable things, it given importance to valuable things of liberty, human rights, and equalities. Okay, it gives importance to individual rights and community rights. That means in the meantime liberalists not only given importance to individual rights, in the meantime liberalists also given importance to the community right also, and it is the duty of the state to provide protection to the individual. Okay, with the sections of people, weaker sections of society, minority people of society, or etc etc. It is the responsibility माने state अंकर responsibility रहुची कि से सदा बड़े कौन करिवे individual rights individual जो माने weaker sections रू belongs करूचंती जो माने सब different जेंते ST SC category belongs करूची से मान को से कौन करिवे protections provide करिवे.
Then next होची liberalism also give importance to communities, especially their language, culture and script. And in the meantime, it also directly shape democratic principles. That means किछि जिनसर कोनोसी कल्चर और लैंग्वेज को एवं कोनोसी कल्चर और लैंग्वेज स्क्रिप्ट किछि तांगर आइडेंटिटी किछि तांगर वैल्यू एई सब जिनस गुडा को भी मध्य कोन करंती लिबरलिस्टिक अप्रोच कोन करंती प्रोटेक्शन प्रोवाइड करंती नॉट ओनली इंडिविजुअल को तो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछनी इंडिया होची गोटे डाइवर्स कंट्री डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रिलीजन लोक माने एठी वास करंती तो केवल खाली तांकर जे इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके लिबरलिस्टिक अप्रोच छाड़ी दउछंती से नुहे से कहउछंती स्टेट रो रिस्पांसिबिलिटी होची जेति कि वीकर सेक्शंस रो लोक अछंती जेति कि एससी एसटी लो कैटेगरी रो लो वीकर सेक्शंस रो लोक अछंती से मानु तो से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवे ता से से मन कोन करिवे कम्युनिटी को मध्य प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवे तांकर लैंग्वेज को तांकर कल्चर को केमते प्रिजर्व करहबो ए सब जिंस प्रति मध्य स्टेट कोन करिवे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवे तो एटा होची लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स रो डिफरेंट इंपोर्टेंस एलिमेंट्स रो देन हमें देखिबा कि देन वी डिस्कस दैट लिबरलिस्टिक अप्रोच केमितिया हमर पॉलिटिक्स रे यूज हे परिबो how liberalistic approach useful in to study politics. Okay, when liberalistic approach apply to study Indian politics, it also be called as system approach. System approach emerged during the time of behavioral movement, and David Easton was the founder of it. Its main purpose was to study development of modern political institutions in developing societies. As I already discussed that liberalism always give importance to what political system. So that's why I discuss about what is political system. Political system कहले हमें कौन बुझिबा काहे कि ना हमें बार-बार ए जिंसडा को देखुछु कि लिबरलिज्म पॉलिटिकल सिस्टम को इंपोर्टेंट दोचंती ना कि स्टेट को सेति की इंपोर्टेंट दोचंती स्टेट रो कोसी पार को सेति की इंपोर्टेंट दोचंती से कोसनी स्टेट रहिबो किंतु स्टेट कोन केमितिया रहिबो से गोटे एज ए नेसेसरी माने लेसेस्फियर स्टेट हिसाब रे रहिबो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे रहिबो लेसेस्फियर स्टेट माने लीस्ट इंटरफियरेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल माने से रहिबे किंतु से लोकंकर फ्रीडम रे इंटरफियर करिवे नहीं से हिसाब रे स्टेट टी रहिबो तो स्टेट रहिबो तो आमे कहू कि पॉलिटिकल सिस्टम टा अधिक इंपोर्टेंट लिबरलिस्ट कहउछंती पॉलिटिकल सिस्टम अधिक इंपोर्टेंट देन द स्टेट देन व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम मन रखिए पॉलिटिकल सिस्टम फास्ट स्टार्ट करथिले डेविड ईस्टन के द्वारा फास्ट पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हितला तो डेविड ईस्टन इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस से होछंती पॉलिटिकल साइंस रो father. So what is political system? Let's we discuss about political system. How political system works? Political system केमितिया काम करूची. Political system केनेटा प्रोसेस माध्यम केनेटा इंस्ट्रूमेंट माध्यम रे काम करछंती सेटा होची इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. आ एटा गोटे सर्टेन एनवायरनमेंट भितरे ही काम करिवो. इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इनपुट रो इंस्ट्रूमेंट कोन होची? What are the instruments of inputs? Instruments are demand and supply. If anybody demanded anything, then it's go through the political system. कोनोसी जिंसो को जदी केही डिमांड करंती एवं सेही डिमांड ता पर्टिकुलर जदी सपोर्ट पांती ताहाले ही सेटा पॉलिटिकल सिस्टम को पसी पारिबो. मन रखिए प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम गोटे स्पेशली गोटे एनवायरनमेंट भितरे ही काम करे. गोटे पॉलिटिकल सिस्टम आ गोटे पॉलिटिकल सिस्टम रा एनवायरनमेंट डिफर करिबो. से एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट के डिफर कराए बाउंड्री द्वारा सेटा डिफर हे थांती. तो को कहली कि पॉलिटिकल सिस्टम को एंट्री करिया पे फास्ट हम कोन दरकार इनपुट होची हमर डिमांड एंड सप्लाई. कोनसी जिंस को के गोटे डिमांड करले तापर डिमांड एंड सपोर्ट कोनसी जिंस के गोटे डिमांड करला पर जेतेबेले से सपोर्ट पाइबो तापर ही सेटा पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल प्रोसेस को से जाय पाइबो प्रोसेस हे पाइबो. ओके प्रोसेस हला पर सेठी हमर अछन सब डिसीजंस मेकर्स माने व्हाट आर द डिमांड्स यू demanded to our political system, whether that demands they must be fulfilled or not. They decide. Political decision maker माने डिसाइड करिवे कि आपण जोटा डिमांड करिसंती सेटा आपण को दिया जाय परिबो कि नाही. तापर सेटा कोन हबो आउटपुट हे कि बाहरिबो माने तर रिजल्ट होची आउटपुट whether yes or no. जदि yes हला अगेन फीडबैक आकार आपण कोन करिवे न्यू डिमांड को भीतर पसे देबे आउथरे गोटे डिमांड कर देबे पॉलिटिकल सिस्टम को. जदि नो हला अगेन आपण कोन करिवे कहबे नाही हमकु तो एटा फुलफिल करियार अछि हमकु दरकार अछि आपण सेटा को पुनी पॉलिटिकल सिस्टम से पसे देबे. तो एमितिया है कि कोन
आपण पुरे एटा सर्कुलर वे रे आपण पॉलिटिकल सिस्टम टा काम करे तो दैट इज द structures of political system and liberalists always give importance to this type of structures, okay, not coercive authority or coercive power of the state. Let's we discuss. In the liberal approach, political system comprises of political institutions, as I discussed, structures and process, and these three attributes keep interacting, conflicting and adjusting with each other, balancing and counterbalancing to themselves. In such a situation, the political system maintains, it does not break down. Initially, many scientists believe upon it, like an example of Rajni Kothari's, and one of his most important book is Politics in India. But mainly other scientists also criticize Rajni Kothari's books Politics in India. Okay. During the period of 1970s, several individual scholars in case of studies of individual state or a group of states use the systematic framework, and they also included such system of state politics such as political parties, caste, religion, language, leadership, elections and pressure groups. Okay, then we discuss changing scope of liberal approach. Changing scope of liberal approach. Since the 1950, the liberal approach has changed in the following ways. Okay, there has been a convergence between its elements of the 1950-1960, and it is no longer averse to using the concept of state, and it studies the activities which aims to achieve social change or consensus with basic democratic values. People mobilization through civil society, organization, multiculturalism, social capital are in electoral process. Okay, then we discuss about civil society. How civil society is helpful. How civil society is helpful in political systems. Okay, then what is civil society? The important element of the liberal approach is individual freedom. But when we discuss about education or state, it also includes community, ethnic group, marginalization sections, and protections of their rights. Just like democratic India, we have fundamental rights, and the right provide protection to citizens and community. But in same case, state has unable to provide protection to the individual and community. Liberal approach views the role of the civil society organized in relation to democratic rights of individual. The liberal approach can help to explain the role of this organization in democratic society or protection of the rights of individuals and groups in the society. The rights of free expression, freedom from associations, freedom to dissent, freedom to generate and disseminate public opinion. It helps us to explain the relationship between state and society. Okay, then what is multiculturalism? Now we discuss about multiculturalism and how it is helpful in political system or Indian political system. Okay, the liberal approach not only talk about individual rights but also it talk about the group rights. India is a diverse country, so in diverse country it is very important to recognize each and everyone rights and respect each and everyone culture. What is multiculturalism? कहले हमें कौन बुझे? Multiculturalism होची इंडिया होची गोटे डाइवर्स कंट्री. तो डाइवर्स कंट्री रे हमर एठी डिफरेंट टाइप्स हमर रिलीजियन रो लोक माने एठी रहउछंदी. तो डिफरेंट काइंड रो जेते रिलीजियन रो लोक मान रहउछंदी, डिफरेंट कल्चर रो लोक माने एठी रहउछंदी, से मान डिफरेंट लैंग्वेज रे कथा होछन, तांगर रिलीजियन अलगा, सब किछि तांगर अलगा अलगा रहउची. तो जेते बेले हमें गोटे कंट्री रहउछु जोठी कि डिफरेंट कल्चर लोक मान रहउछंदी, तो एठी बहुत इंपोर्टेंट रहउची कि प्रत्येक कल्चर को, प्रत्येक रिलीजियन को हमें केमितिया रेस्पेक्ट प्रोवाइड करबे एवं स्टेट केमितिया प्रत्येक रिलीजियन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करबो. एठी आ गोटे जिंस देखियो मिली छि कि हमें एठी को टाइप रो कल्चर को एक्सेप्ट करछु मल्टीकल्चरली, माने एठी हम कल्चर टा मिक्स अप हेकी रहउछि, माने गोटे कल्चर आ गोटे कल्चर सहित मिक्स रहउछि. हमें एठी गोटे लैंग्वेज सहित डिफरेंट लैंग्वेज रे मध्य कथा होछु. दैट इज मल्टीकल्चरलिज्म एस्पेक्ट. It means human beings are live and grown up within a culturally structured society, or माने that means individual गोटे को टाइप रो सोसाइटी रे रहउछंदी, को टाइप रो जगह रे रहउछंदी जोठी कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियन रो लोक मान रहउछंदी. सेही टाइप रो गोटे सिचुएशन, सेही टाइप रो सोसाइटी रे लोक माने रहउछंदी. तो सेही टाइप रो सोसाइटी रे केमितिया लोक मानकर फ्रीडम टा
रक्षा पाइबो प्रत्येक लोकंकर फ्रीडम केमतिया लोक माने एन्जॉय करि परिबे ता प्रति मध्ये स्टेट ध्यान देबा कथा अकॉर्डिंग टू लिबरलिस्ट अप्रोच. They organize their lives and social relations in terms of a culturally diverse system of meaning and significance. These cultural communities generally demand various kinds of rights to maintain their collective identity. Such rights called groups, collective or communal rights. Multiculturalism is necessarily associated with democracy. It either guarantees or attempts to provide cultural rights of religious or and linguistic minority communities to preserve their culture, language, and script and other rights. Okay. Then next point is what is social capital. Social capital is since the 1990s the concept of social capital has been used to explain nature of relations among communities. It is indicative of the existence of civil society and democracy. The concept is taken from the equivalence of associations and Italian political scientist Robert Putnam used this in his book Making Democracy Work. Civic tradition in modern Italy. Social capital include existence of networking among people in a group or community who share common values and trust each other. The rise of new social movements, civil society, and realizations of the importance of study substantive democracy has added to the significance to these perspectives. Okay. So these are the different important principles, different important features of liberalistic approach. Okay. Then next, as our time is very short, now we go to next approach, that is Marxist approach. Okay. If you have any doubt, then you ask me when our session is complete. Then next we discuss about Marxist approach. What is Marxist approach? Marxist approach is a way of studying society and it is influenced by Marxism. Okay, when Marxist approach again a difference to भी बतेबी कि liberalistic approach और Marxist approach भितर हमर difference टा कौन होची कि हमें को concept को नहीं कि दीटा approach develop हेतला माने हमें यदि liberalist approach और Marxist approach को देखिबा liberalist approach स्टेट को नहीं कि कहिसंती मार्क्सिस्ट अप्रोच मध्ये स्टेट को नहीं कि कहिसंती तो दीटा भितर डिफरेंस कोन रहउची लिबरलिस्टिक कांसेप्ट स्टेट कर व्यू कोन रहउची कि स्टेट रो रोल रहिबो किंतु केमटा रहिबो लिमिटेड आकार रहिबो एवं से कोन करिवो गोटे वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हिसाब रे रहिबो से लोक मानकर राइट्स लिबर्टी इक्वालिटी एगुला को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिबा पे स्टेट रहिबो माने स्टेट रो रोल टा रहिबो किंतु हमें एठी मार्क्सिस्ट अप्रोच रे पढिबा जोतरे कोन रहिबो स्टेट होची गोटे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन माने स्टेट को गोटे एक्सप्लॉयटेशन रो इंस्ट्रूमेंट बोली कि कुहा जाउची तो मार्क्सिस्ट अप्रोच रे हमें स्टेट केमितिया गोटे एक्सप्लॉयटेशन हिसाब रे रहउची एक्सप्लॉयटेशन मान लोक मान को केमिति एक्सप्लॉइट करे एवं स्टेट सदा बेले कहा को फेवर करे ए सब जिंस गुडा हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच रे पढिबा तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इज अ वे ऑफ स्टडीइंग सोसाइटी and it is influenced by Marxism. Marxist approach is influenced by Marxism. Okay, one question always come in everybody's mind that whether changes occurs due to Marxian or Marxism, but nothing can be definitely said about the changes in society or revolution as envisaged by Marxism. माने हम केबे भी कंफर्मली कहि परिबा नहीं कि हम सोसाइटी रे जहां भी चेंजेस होची जहां भी एफर्ट सपोर्ट होची जहां भी चेंजेस आसुची सेगुला सब मार्क्सिस्ट अप्रोच आसीथिला बोली कि चेंजेस आसु बोली कि हम ए जिंसटा कहि परिबा नहीं. Okay, but Marxism as a tool to explain politics or changes in society is being used by different scholars. Different scholars माने कहिसंती कि Marxism maybe Marxism द्वारा हम सोसाइटी रे चेंजेस आसी नाही माने हम कंटिन्यू कहि परिबानी कि हम सब बेले चेंजेस आसी सोसाइटी रे चेंजेस आसी मार्क्सिज्म द्वारा हम कहि परिबानी किंतु मार्क्सिज्म होची गोटे इंस्ट्रूमेंट बा मार्क्सिज्म होची गोटे टूल जहां द्वारा कि सोसाइटी रे परिवर्तन सोसाइटी रे किछि परिवर्तन आनिबा कि मार्क्सिस्ट approach develop it. This is known as Marxist or Marxist approach of perspective. Here we discuss about Marxist approach has been used to explain politics in academia
पॉलिटिक्स के हमरो मार्क्सिस्ट अप्रोच रे यूज इन इंडिया रे ताकू मध्ये हम डिस्कस करबा मार्क्सिस्ट एंड टेनेंट्स सहित Marxist approach to Indian politics is guided by basic tenets of Marxism. These tenets attempt to interpret society in such a way that it helps to change the society. The various tenets of Marxist approach are dialectical materialism, historical materialism, and one more thing, class struggle or class struggle or end of class exploitations. Okay, these are the basic tenets of Marxist approach. So we discuss what are the importance of this. Okay, first we discuss dialectical materialism. What is dialectical materialism? Dialectical is the word derived from word idea. Okay, Marxist borrowed this dialectical method from German philosopher G.W.F. Hegel. Hegel को मार्क्स कौन करे थे dialectical materialism को borrow करे थे. It's how to combine Hegel को idea और Marx's idea similar से कौन करे dialectical से derive करके and Hegel had postulated that idea consists of the essence of the universe and that all social institutions were the manifestations of the changing forms of idea. Idea evolved into new form because of its inherent tension exemplified by the clash between thesis and antithesis. What is thesis? Thesis means partial truth and antithesis is opposite of that partial truth. A resulting is synthesis. As long as synthesis itself contains partial truth, it takes on the role of thesis and undergoes the same process until this process reaches absolute truth as manifested in the absolute idea or absolute consciousness. माने कौन हो जाउची किछि भी आइडिया डिराइव है सपोज न्यू आइडिया डिराइव है कौन करा जाय कौन रहउची एक्टिंग टू कार्ल मार्क्स बा मार्क्सिज्म से कहिथिले कि कौन रहबो गोटे आउट आइडिया माने गोटे आइडिया प्रिवेलिंग आइडिया चालिछि आ गोटे न्यू आइडिया एही न्यू जो आइडिया चालिछि से आइडिया को हम कौन करबा टेक्स्ट जोटा कि हमर आसी न्यू आसी that new idea ताकू हमें antithesis बोली कहबा तो जते बेले thesis और antithesis भितर कोन हबो क्लास हबो से गोटे न्यू आइडिया antithesis बोली so contrary Marx believe matter से ताकू Hegel से ताकू आइडिया रे पाइबा पई यूज करथिले कार्ल मार्क्स एथरे कोन कहउछंती कि एठारे मैटर पाइबा पई एही प्रिंसिपल्स को यूज करथिले मैटर वाज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोशल इंस्टीट्यूशंस वर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस मैटर अंडरवेंट practical process because of its inherent tension until perfect material conditions exemplified. Excuse me, ma'am. Hello. By Ma'am, rational not clear. After we finish this topic then we discuss. Okay ma'am, thank you. By rational Marxist underwent a dialectical process because of its inherent tensions until perfect material conditions exemplified by a rational mode of productions come into existence. According to Engels, in his in his book Anti-Theory postulated the three laws of material dialectics, that is transformations of quality into quantity and the interpretations of opposite, the negotiations of negotiations. These are the basic source where matter is come. Okay, then we discuss what is historical materialism. That is the concept of dialectical materialism. Now we discuss about historical materialism, which is the most important tenets of Marxist approach. Okay, historical materialism. While dialectical materialism represents the philosophical basis of Marxism, historical materialism represents its scientific basis. It implies that in any given approach, the economic relations of society,
the means whereby man and woman undertake production, distribution, and change of material goods for the satisfaction of their needs, play important role in shaping their social, political, intellectual, and ethical relationships. A perfect society will secure all the necessities of life to the satisfaction of all its members, but it would be achieved through a long-run process. Initially, internal stress and strain in maintenance many imperfection forms of society. These conditions tend to attain perfection in the course of social development. Okay, then let's we broadly discuss about historical materialism, how which way historical materialism works. According to Marxism, the structure of society may be under the structure of society may be formed by two components or two units. Is superstructure. Okay. In this building, base consists of mode of production. Space in which base consists by mode of productions. While superstructure is represented by spiritual structure, religion, moral, social practices, literature, arts and culture, etc. And whereas mode of production has components: process of productions and relations of productions. Process of production cannot remain static. They have Excuse me, ma'am. of Hello, सुबह development जाऊंगी. in Excuse me, ma'am. yes. Clear सुबह जाऊंगी. Clear सुबह Okay. जाऊंगी. Now I am audible. Then components that is process of product and relations of product. मैडम टिके वीडियो को ऑफ कर दियंतु तो खाली ऑडियो रहइबो. Now I'm here audible. Okay. Then we discuss what is mode of production. Mode of production is two components and relations of products. Of products cannot remain static. They have an inherent tendency of development in the direction of achieving the perfect society. Forces of production have two components: means of productions. Means of productions means tools and equipment, and labor power. Labor means human knowledge and skills. Man and woman constantly endeavor to devise better ways of production. Implement in the means of productions is manifested in the development of technology. This is development and skills required to operate the new technology. Hence, corresponding development of labor power. On the other hand, the given a pattern of ownership of the means of social production. This gives rise to two contending classes, that is haves and have-nots. In earlier stage of historical development of the process of production fails to make any indie pattern. In other words, changes in the mode of production about changes in the nature of contending classes, but they do not bring about an end of class conflict. Change in the number of contending classes is brought about by social revolution. Ma'am, When material production, your voice is yes, not audible to hear. हम अपना voice clear है पर नहीं. okay, just a minute. Okay. Now, No, ma'am. कटी कटी जाउछ. मैडम टिके डिस्कनेक्ट करिक आउथरे कनेक्ट करले.
Hello. हाँ मैडम कंटिन्यू। हेलो 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 टिके वेट करो मैडम करो यस डिस्कशन नहीं वर्षा घड़घड़ी राउर कलर होची बुझिल आज्ञा आज्ञा से बहुत जल्दी जॉइन करते चिंता नहीं क्लास आज्ञा रिज्यूम वेरी सुन हाँ जस्ट पेशेंस हाँ मैडम केवल ऑडियो ऑन करो। Okay. Now I am audible to everyone. Hello. हाँ मैडम आसी बढ़िया आसी। Okay. Now I discuss about what is process of productions. Process of production have two components. That is means of productions. Means of production means tools and equipment and labor power. That is human knowledge and skills. Man and woman constantly they try to have better ways of productions. Improvement in the means of production is manifested in the development of technology. This is matched by the development of human knowledge and skills as required to operate the new technology. Here there is a corresponding development of labor power. On the other hand, relations of productions in any given approach are determined by the pattern of ownership of the means of social production. These give rise to two classes, that is haves and have-nots. In earlier stages of historical development of the forces of production fails to make any gain in this pattern. In other words, changes in the mode of production about changes in the nature of contending classes, but they do not bring about an end of the class conflict. Changes in the nature of contending classes is itself brought about by a social revolution. When material productive forces of
society come in conflict with the existing relations of production, these relations turn into their fetters. The new social classes which come to own new means of production feel constrained by these fetters and overthrows of old dominant class in revolutions. Okay. Now we discuss broadly discuss what is the historical materialism. Historical materialism हमें पहले कौन बुझे historical materialism काम करूची historical materialism society को देखिबा society structures को देखिबा ताको कौन करे कि two parts से divide करा base and what होची superstructure political structures, religion, moral, social practices, literature, art, culture, जहाँ एगुड़ा कुछ हमें सुपर की कहबा सो हमरो मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक कौन करा जाय छी टू पार्ट्स से डिवाइड करा छी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन को जिंस को नहीं हमें कहि परिबा कि एटा होची मोड ऑफ सेगुड़ा होची सब हमर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी रो स्ट्रक्चर टा केमिति है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स अनुसार स्ट्रक्चर production से नोटा ये पार्ट से डिवाइड करता है सेटा हो production process of production static में से सब dynamic productions. Okay, if हम relations of productions का relations of productions में जो भी हमरा लोक माने रहउची तांगर प्रोडक्शन सहित बा ओनर रहउची किछि लैंड रो ओनर माने रहउचन तांगर हमर प्रोडक्शन सहित रिलेशंस कोन रहउची ओनरशिप ऑफ अ सोशल प्रोसेस और सोशल इंस्टीट्यूशंस और एनी लैंड. ओके देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस कहले प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जिमता कहले कि जोटा कि स्टैटिक नुने आ को जिंस को नै कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस आछि सेटा होची मींस ऑफ प्रोडक्शंस आ लेबर पावर मींस ऑफ प्रोडक्शंस अगेन को जिंस को हम मींस ऑफ प्रोडक्शंस बोली कहि परिबा जो जहा माध्यम रे हम प्रोडक्शन करि परिबा सेटा होची टूल्स कोनसी टूल्स सेला इक्विपमेंट सेला एगुडा को हमें कोन कहिबा मींस ऑफ प्रोडक्शंस आ गोटे होची लेबर पावर माने जो लोकन को द्वारा हमें कामटा करूछु लेबर द्वारा हमें जो कामटा करूछु तो एतिकिटा होची सोसाइटी रे गोटे स्ट्रक्चर ताहा द्वारा कोन होची सोसाइटी रे हमर किछि गोटे मैटर डिराइव होची तो ता द्वारा कोन होची आ ए जिंसटा केवल स्टैटिक नै गोटे फेज वाइज एटा चेंजेबल बोली कि कुहा जाउची तो एतिकी तांकर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रे से कहिथिले. देन नेक्स्ट तांकर होची आ गोटे जिंस नेक्स्ट तांकर फिनोमेना होची डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट आइगन को जिंस को हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट बोली कहबा class conflict or class struggle is an internal part of historical materialism. Okay, history means all written history. When Communist Manifesto was originally written, the prehistory given account of primitive tribal communities with common ownership of means of productions was not known. When it became known, it was described as primitive communism. The Communist Manifesto deals with the period beginning with the division of society into antagonistic classes since the emergence of private property. So Communist Manifesto proceeds freemen and slave, participation and plebiscite, lord and serf, guild and master, and journeyman in a word oppressor and oppressed stood in constant opposition to one another, carried out on uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended either in a revolutionary reconstitutions of society at large or in the common ruin of the contending classes. माने क्लास रे कोन रहउची सदा बेले सोसाइटी रे जो भी एक्जिस्टिंग फॉर्म रहउची आ गुटे जिंस जोटा हमें कहलु कि मटेरियलिज्म रे हमें कोन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमने आ गुटे जिंस देखिया को पाइलु कि सदा बेले गोटे क्लास वार होउची क्लास वार ता सदा बेले का भीतर होउची क्लास वार होउची हैव्स आउ हैव नॉट्स माने जो माने को पाखरे अछि माने प्रोलेटारिएट आ बुर्जुआस ए दी जन को भीतर सदा बेले कोन होउची गोटे क्लास वार होउची आ अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट से कहथिले ए क्लास वार लागी रहिथिबो आ काहे कि से स्टेट को अपोज करथिले एठी देखिबा हमें काहे कि ना स्टेट सदा बेले कोन करंती काहा फेवर काम करंती बुर्जुआदिस्ट मानक जो माने कैपिटलिस्ट माने अछंती धनी वर्गर लोक माने अछंती रिच कैटेगरी रो लोक अछंती ताकू सदा बेले स्टेट सपोर्ट करंती बोली कि मार्क्सिस्ट कहिसंती एवं
कौन हबो कि सेति पई से स्टेट को कहछन्ती एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से सदा बेले गरीब माने को एक्सप्लॉयट करंती आउ ए सेति पई कोन थाए सदा बेले हैव्स और हैव नॉट्स भीतर गोटे कॉन्ट्राडिक्शन चली थाए, सदा बेले गोटे कॉन्फ्लिक्ट गोटे द्वंद्व गोटे झगड़ा चली थाए आउ अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट से कहछन्ती एटा कंटिन्यू चलिबो बट गोटे दिन आसीबो स्टेट आउ रहिबनी स्टेट विदर आवे हे जिवो स्टेट एबोलिश हे जिवो आउ एई गरीब लोक जेहेतु तांकर संख्याटा अधिक अछि सेमाने ही विन करिवे एवं सेमाने तांकर डिक्टेटरशिप टाकू एस्टैब्लिश करिवे, दैट इज डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। तो एगुडा होची बेसिक फीचर्स कार्ल मार्क्स कर एगुडा होची बेसिक फीचर्स बेसिक टिनास जोटी कार्ल मार्क्स तांकर मार्क्सिस्ट अप्रोच रे कहिथिबे। एबे हमें देखिबा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड क्लासेस इन रूरल एरियास रे एटा केमितिया यूटिलाइज होची। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच द क्लासेस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फॉलोइंग वेज who owns the land and other resources such as tools and instruments to cultivate land, who works in the land, and what is the nature of relationship among those who work in land and other resources. Wage distribution. The rural rich own land and other resources. They generally do not work in the land but get the work done by wage laborers. However, middle peasants work on land, but like the landlords and rich peasants, they do not work on anybody else land. The rural poor, they do not have their own land and they have to work to others land. That means माने rural area रे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ता केमितिया काम करछि से कोन करले मार्क्सिस्ट कोन करले लेबर्स मानकु तीनी कैटेगरी रे डिवाइड कर देले। फर्स्ट करले रिच कैटेगरी लोक माने कोन करूछन्ती रिच कैटेगरी लोक माने पाखरे लैंड रहउची लैंड रहिला पर भी से माने कोन करछन्ती निज लैंड रे निजे कल्टीवेट करू नहांती से माने कोन करछन्ती सेतरे लेबर लगे दोछन्ती लेबर लगेला पर लेबर को किछि टका दे दोछन्ती बाकी प्रॉफिट से निजे नै जाउछन्ती किंतु निजे लैंड रे ओल्हे की काम करू नहांती। एटा होछि गुटे कैटेगरी लोक कि से माने किछि तांगर एफर्ट न दे कि भी किछि काम न करे कि भी से माने तांको फैमिली को भलो सपोर्ट देई पाउछन्ती से माने किछि अर्न करि पाउछन्ती विदाउट गिवन एनी एफर्ट। देन नेक्स्ट मिडिल कैटेगरी लोक रहिले मिडिल कैटेगरी लोक माने केमते रहिले से माने कोन करूछन्ती लैंड रे निजो लैंड रे समान निजे काम करछन्ती से माने जेंते कि फर्स्ट कैटेगरी हमें रिच कैटेगरी रे हमें देखिलु रिच कैटेगरी कोन होची से माने तांको लैंड रे निजे न काम करी कि अलगा लेबर मानको काम करौछन्ती। तो सेकंड कैटेगरी कोन होची से माने अलगा लोक को काम करू नहंती बट निजो लैंड रे निजे ही काम करछन्ती एवं सेठु जोटा जो जिंस अर्न करले सेटा को से माने यूटिलाइज करछन्ती। एटा हला आपन सेकंड कैटेगरी। देन थर्ड कैटेगरी होची जो माने पोर रूरल एरियास पोर पीपल से माने को पाखरे किछि लैंड नाही से माने कोन करछन्ती फर्स्ट कैटेगरी लोक माने को लैंड रे जे कि काम करछन्ती एवं सेठु से माने पूंजी अर्जन करछन्ती। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से क्लासेस बा रूरल एरियास को से एई तीनटा वे रे डिवाइड करछन्ती गोटे होची रिच गोटे होची मिडिल आ गोटे होची पोर कैटेगरी। देन देखिबा हमें एथि पय कोन होची डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स मध्ये सब हेची डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स मध्ये हेची। सिंस मार्क्सिस्ट फेवर लोअर क्लासेस सच एज एग्रीकल्चरल लेबरर वर्किंग क्लास एंड peasantry it aims to end class exploitation। कार्ल मार्क्स बा मार्क्सिस्ट अप्रोच सदा बेले को माने को अधिक इंपोर्टेंस दियंती बा को माने को डेवलपमेंट कथा चिंता करंती जो माने पोर कैटेगरी लोक माने अछंती जो माने लेबर कैटेगरी लोक माने अछंती वर्किंग क्लास peasants बा एग्रीकल्चरलिस्ट सेमान को केमितिया सपोर्ट करा जाय परिबो एवं तांको सहित जो एक्सप्लॉयटेशंस होची से एक्सप्लॉयटेशंस को केमिति रोका जाय परिबो ता प्रति सदा बेले मार्क्सिस्ट काम करंती। Marxist approach emphasis is studying material conditions of classes, their social relations, and attempt by them to improve their condition. Their attempt include collective actions and movements of different classes and different movement, जिनके कि ला peasants and urban movements, working class movement, different movement माध्यम रे different struggles माध्यम रे केमितिया सेमानको exploitations टा को रोका जाय परिबो केमितिया तांको सहित justice provide तांको केमितिया justice दिया जाय परिबो ता प्रति कार्ल मार्क्स सदा बेले कहिसंती बा मार्क्सिस्ट अप्रोच सदा बेले कहिसंती। वर्किंग क्लास माने केमितिया तांको केमितिया जस्टिस दे जाय परिबो जेमते कि फुलफिल हे परिबो तांगर बेसिक नीड्स ता जो रहउची फूड हाउसिंग एजुकेशन हेल्थ एवडा जो बेसिक नीड्स रहउची बेसिक नीड्स ता फुलफिल करकी केमितिया तांको जस्टिस दिया जाय परिबो ता प्रति कार्ल मार्क्स मार्क्सिस्ट अप्रोच सदा बेले कहिसंती। नेक्स्ट हम देखिबा
आमे इंडियन स्टेट रे आमे देखिबा कि कोन कोन मार्क्सिस्ट अप्रोच रो रोल टा केमितिया इंडियन स्टेट रे रह पारुची इन मार्क्सिस्ट अप्रोच द स्टेट इज ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन टू स्टडी पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री द मार्क्सिस्ट व्यू द स्टेट एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द बुर्जुआजीज और द प्रोलेटारिएट क्लासेस जेमते कि हम आगुरु कहि साली कि स्टेट होची को मानक पई बुर्जुआजीज मानक पई ना कि से प्रोलेटारिएट मानक सेति पई से सदा बेले हमें लिबरलिस्ट अप्रोच रे देखिथिलु कि स्टेट रो रोल टा रहिबो बट स्टेट रो रोल टा केमितिया रहिबो लिमिटेड रहिबो से गोटे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हिसाब रे काम करिवो आ सदा बेले से लोक मानक फ्रीडम लोक मानक राइट लोक मानक इक्वालिटी एगुडा को सदा बेले केमितिया प्रोटेक्शन दे परिबो ता प्रति स्टेट रहिबो एवं काम करिवो किंतु मार्क्सिस्ट अप्रोच से कोन कहिले कि स्टेट बिल्कुल रहिबो ही नाही काहे कि ना स्टेट जदी रहिला से सदा बेले कोन करिवो गोटे एक्सप्लॉयटेशन इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे काम करिवो एवं सदा बेले से बुर्जुआजीज मानक पई रिच कैटेगरी लोक मानक पई काम करिवो बोली कि मार्क्सिस्ट कहजन सेति में स्टेट को टोटली हटेई देबा कथा स्टेट बिल्कुल रहिबा कथा नै बोली कि मार्क्सिस्ट अप्रोच कहजंती तो एबे देखिबा तांकर पार्टी सिस्टम ऊपर से कोन कहिथिले पार्टीज ऊपर तांकर कोन व्यू रहिछि तो से एक्चुअली से मार्क्सिस्ट तीनोटी पार्टी ऊपर कहिथिले थ्री काइंड्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज हु फॉलो मार्क्सियन आइडियोलॉजी एंड द थ्री कैटेगरीज इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई the Communist Party of Indian Marxist, that is CPIM, and several Naxalist parties who define Indian state according to Marxist approach. So CPI तांकर phenomena कौन थला according to CPI the Indian state is bourgeoisie, landlords and capitals. CPI माने कहउतले कि Indian state ता ओ मानको पई रहिछि bourgeoisie मानको पई रहिछि landlords मानको पई रहिछि capitalist मानको रहिछि पई रहिछि ना कि से गरीब लोक मानको पई रहिछि एटा थला मार्क्सिस्ट माने CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट तांकर व्यू रहितला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तांकर कोन व्यू रहितला से कहितले स्टेट इज ए नेशनल बुर्जुआजीज माने स्टेट सदाबले निजो इंटरेस्ट निजो बेनिफिट पई काम करिवो कैपिटलिस्ट व्हिच रिप्रेजेंट नेशनल इंटरेस्ट केमितिया देशर डेवलपमेंट हे परिवो किंदा देश डेवलप हे परिवो देशर उन्नति हे परिवो ता प्रति से काम करिवो सेतरे से देखिबोनी कि माने को गरीब लोकर खेती होची कोन होची ए जिंस से देखिबो नाही तेता सीपीआई रो view against state then different nationalist view state is an representative of bourgeoisie of the proprietor classes माने से भी कहितले कि स्टेट सदा बेले काम करछि bourgeoisie मानक पई एवं से कोनोसी काम तार माने से सदा बेले एक्सप्लॉइट करूछि गरीब लोकन पई तांगर कोनोसी स्टेट रो कोनोसी रोल नाही बोली कि कहउछन तो एटा होछि हमरो मार्क्सिस्ट अप्रोच वा मार्क्सिस्ट फेनोमेना तो लिबरलिस्ट सरिला मार्क्सिस्ट सरिला लिबरलिस्ट और मार्क्सिस्ट रे जहा भी डाउट्स रोछि हमें विदिन जल्दी सरी दबा गांधीयन अप्रोच सरला परे जहा भी डाउट्स रोछि हमें सेला को डिस्कस करिबा तो हमें स्टार्ट करिबा गांधीज्म as we all know that Gandhian approach gives significance to non-violence, ethics and principles of trusteeship, etc. Gandhian approach also give importance to truth and non-violence and also suggests way to build new society. The tenets of Gandhian approach are truth, non-violence, satyagraha, swaraj, sarvodaya, justifications of means to achieving goals, ethics, morality, ramarajya. These are the all important tools or tenets of Gandhian approach. Non-violence is more than just avoidance of violence. To use non-violent and moral or ethical tools to achieving goals means to follow a method conduct which is known as satyagraha. According to Gandhism, the ultimate goal is to establish Swaraj or self-control. This will lead to formation of Ramarajya or a society where people live in peace and harmony. Gandhiji सदा को जिनस को अधिक गुरुत्व दउथिले नॉन वायलेंस को गुरुत्व दउथिले ट्रुथ को गुरुत्व दउथिले सत्याग्रह को गुरुत्व दउथिले स्वराज सर्वोदय रामराज्य एंड जस्टिफाई मींस दैट मींस एंड जस्टिफाई मींस ए सब तांकर मेन सब टिनेंस रहिछि जो जिनस को से गुरुत्व देइ छंती एवं गोटे स्टेट रो कोन रोल रहिछि से या माध्यम रे बुझै छंती कि से को टाइप रो स्टेट कथा कहछि स्वराज से भी मध्य कहिनांती कि स्टेट गोटे इंस्ट्रूमेंट रहइबो गोटे अथॉरिटी रहइबो जे कि गोटे एक्सप्लॉयटेशन हिसाब रे काम करिवो से अनुसार से कहिनांती से भी रहि छंती कि स्टेट गोटे लिमिटेड रोल से प्ले करिवो तो देखिबा हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कोन कहि छंती
In political science, the most common themes which have been studied by Gandhian approach are social movements and uses of satyagraha in them. The followers of Gandhiji such as Charan Singh, Lohia and other social leaders. Lohia and Charan Singh attacked industrializations in favor of small-scale industries. Gandhian approach also talked that the role of the state performed by Panchayati Raj institutions, which was established during the time of 73rd and 74th constitutional amendment. States should perform minimum concern. Gandhism support democracy in which people share power and participation in decision-making process through decentralization or Panchayati Raj institutions. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏଥିକ୍ସ ର ମଧ୍ୟ କଣ ରୋଲଟା ରହିଛି ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ର କଣ ରୋଲ ରହିଛି ସେଟା ଦେଖିବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ର ରୋଲ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କେମିତି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ଆମ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ କେମିତି ୟୁଜ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ ethics means what ethics means moral principles as a moral philosopher Gandhi treated ethics as the guiding star of all human behavior including politics. Gandhi's ethics was based on moral teaching of all religions. Although he paid special attention to time-honored Hindu religion, he expressed his firm faith in the spiritualizations of politics. This means that if politics was to be a blessing and not a cause to human being, it should be informed by the highest ethical and spiritual principles. In other words, politics should be guided by high moral standards and not by expediency. This is the concept of of truth is the essence of Gandhiji. But how to discover truth? It is the difficult to finding God himself. Truth is like a God according to Gandhism. In Gandhian view, God and truth are inseparable. That means we can't separate God and truth. Okay, devotions of God can be carried out through devotions of His creations, particularly through the service to the downtrodden, as Gandhi wrote in his book Harizan. Okay, then in his doctrine of trusteeship, in his doctrine of trusteeship, he said, he broadly speaking, that Gandhi believed in simple living at the level of production as well as consumption. He gave primacy to simple technology over heavy industries. Simple technology had the capacity of mass employment, whereas advanced technology would create vast unemployment, particularly in a country like India, and would promote consumerism with all its ill effects. Gandhi preferred production by means over mass production by heavy machinery. However, he realized that it was not feasible to switch over to the new system abruptly. Wider use of simple technology would be kept in mind in the course of future expansion. The existing system of large-scale productions may be allowed to continue with necessary changes in the attitude of the owners of means of productions. Okay, for the transformations of this relationship, Gandhi enunciated that his doctrine of trusteeship. He urges landlords and capitalists capitalists not to consider themselves as the sole proprietor of their professions, but only a trustees of a gift based upon by God for the service of humanity. Gandhi realized that the existing system had become oppressive because of the moral decline. If the organization of agricultural and industry could be persuaded to act as public servant, they would win wide public respect instead of existing hatred. The tendency of class conflict would then we go through the different movements. What are the different movements? Social movements. Let me discuss social movement. Social movement like Gujarat movement in Gujarat 1974 against the price rise. Ghanshyam Shah shows that the role of Satyagraha in anti-levy. The movement, which was launched by the student, began against inflated
mess bills took up varieties of issues, that is corruption, black marketing, price rise, civil liberties, etc., which result resign of Gujarat Chief Minister Chiman Bhai Patel. Another movement is JP movement, that type of movement. It provided a background to imposition of emergency in 1975. Okay, these are the social movement. Like many other movements are also held. There is also a need of party system according to Gandhi. There is also need of party system. Without proper party structure, elections will lose credibility. The impact of, then we discuss the impact of Gandhian philosophy on public policies. The Janta government policies attempted to replace Nehruvian model of development like investment priorities and plan allocations in favor of agricultural rather than industry, employment through investment in agriculture and small scale industries and appropriate policy. That means Gandhi always give importance to small scale industries and agriculturalist industries. गांधीजीଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଦାବେଳେ ସେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମାନେ view कौन रही क्लासलेस सोसाइटी प्रति कि हम जेमते कि हमर कार्ल मार्क्स कहिथिले बा मार्क्सिस्ट अप्रोच रे हम देखिलु, मार्क्सिस्ट अप्रोच रे हम देखिलु कि कार्ल मार्क्स रो केमते क्लासलेस सोसाइटी रहइबो बा स्टेटलेस सोसाइटी रहइबो, काहे कि स्टेट होची गोटे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तति स्टेटलेस सोसाइटी बा क्लासलेस सोसाइटी केमते एस्टैब्लिश हे परिबो। तो से अनुसार मार्क्स गांधी कौन व्यू देथिले क्लासलेस सोसाइटी प्रति से कौन व्यू देथिले देखिबा। Okay, Gandhi's faith in human equality made him a strong veterinary of a classless society. He realized that the divisions of labor among different individuals was inevitable. However, class division of society was not directly related to division of labor. It was the product of a mindset in which one type of labor, that is physical labor, was regarded as inferior to another type of labor, that is mental labor or more mere leisure. Gandhi sought to create a sense of equality among people by making bread labor compulsory for all. So these are the concept of classless society. Okay, lastly, we discuss about Gandhian perspective and postmodernism. Gandhian perspective of postmodernism रे तांकर कोन व्यू रहिछि, लास्टली हम डिस्कस करिबा एंड एटा सरी गला परे हमें क्वेश्चन आंसर सब डिस्कस करिबा। In book Postmodern Gandhi and Other Essay, Lord I. Rudolph and Sumani H. Rudolph liken Gandhi to a postmodern thinker. They challenge the general notion about Gandhi that he was a traditional leader. In their opinion, Gandhi was a postmodernist. Why they consider Gandhi as postmodernist thinker? Because of some features of postmodernism. These features are primary to the statement of a whole or its fragments, truth as a contested reality, and significance of the context. Gandhi's emphasis on the need for decentralization of social and political power also qualifies him to be designated as postmodern thinker. देखिपा गांधीजी को पर्सपेक्टिव्स टा कोन रहउची पोस्ट मॉडर्निज्म काहे कि तांको हमें कहिबा कि सी होउछन गोटे पोस्ट मॉडर्न थिंकर, काहे कि तांकर किछि इंपोर्टेंट फीचर्स गुडा रहउची जेंते कि ट्रूथ एज ए कंटेस्टिंग रियलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। एई सब जिंस गुडा पई हमें बाद से जो कहिसंती डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर माने पावर टा कोन हिकी रहिबो डिसेंट्रलाइज हेकी रहिबो, जेंते कि हमरो पावर टा डिस्ट्रीब्यूट हेकी रहि कहा माध्यम रे स्टेट सेंटर और कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो पावर टा हमर एंड डिस्ट्रीब्यूट हेकी रहि तो जो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी बा हमर रहउची पंचायती राज सिस्टम्स बा ट्रूथ एई सब कांसेप्ट गुडा पई तांको कोहा जाउची कि से होछंती गोटे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। Okay, now we'll discuss about question answer one by one. Yes.
अच्छा किछि प्रोबेबल क्वेश्चन मध्ये मु कहि दउछि जो क्वेश्चंस गुडा इंपोर्टेंट रहउछि कि कोन कोन क्वेश्चंस हमर सब आसी परिबो को क्वेश्चंस इंपोर्टेंट रहउछि को अप्रोचेस रो को कांसेप्ट को क्वेश्चंस ता अधिक इंपोर्टेंट रहउछि से क्वेश्चंस गुडा भी अपन नोट करि परिबे जेमते कि आमे यदि लिबरलिस्ट अप्रोच को गुरुत्वपूर्ण देबा तो लिबरलिस्ट अप्रोच रो रोल टा केमितिया स्टेट प्रति रहउछि सबुठु इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हमरो लिबरलिस्ट अप्रोच रो सबुठु अधिक स्टेट प्रति केमितिया तार रोल टा रहउछि तो ए क्वेश्चन टा गोटे इंपोर्टेंट रहउछि then eta gote rahiba what is the difference between classical liberalism and new liberalism okay ମୁଁ ଏଟା ବତେଇନି ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ଏଟା ବି ଗୋଟେ important questions liberalism ର ଆସିପାରେ what is the difference between classical liberalism and new liberalism ଏଟା ଗୋଟେ ହେଇ ପାରିବ how liberal approach is important in Indian political system ଏଟା ଗୋଟେ important question ହେଇ ପାରିବ Okay, just 2 minutes बातें दोची लिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म टा कोन अटे क्लासिकल लिबरलिज्म को आमे नेगेटिव लिबरलिज्म कहि परिबा मॉडर्न लिबरलिज्म को आमे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहि परिबा तो को सेंस रे आमे ताको नेगेटिव लिबरलिज्म कहिबा को सेंस रे को आमे पॉजिटिव लिबरलिज्म कहिबा मॉडर्न लिबरलिज्म बा कंटेम्परेरी लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म को आमे पॉजिटिव लिबरलिज्म बोली कहिबा और क्लासिकल लिबरलिज्म को आमे कोन कहि परिबा नेगेटिव लिबरलिज्म कहिबा काहे कि ना क्लासिकल लिबरलिज्म जे से स्टेट को नेगेटिव हिसाब रे देखै दिले स्टेट रो रोल टा गोटे नेगेटिव रोल हिसाब रे प्ले करूची सेति पई ताकू नेगेटिव लिबरलिज्म बोली कि कहली काहे कि ना से कहली कि स्टेट रहिबो किंतु स्टेट गोटे को टाइप रो रहिबो स्टेट गोटे लोक मानकर बेसिक नीड्स फुलफिल करि पारथुओ लोक मानकर बेसिक नीड्स फुलफिल करि पारथुओ लोक मानकर फ्रीडम को से लोक मानकर फ्रीडम को से रक्षा करि पारथुओ लोक मानकर इक्वालिटी को से रक्षा करि पारथुओ त हे सेही हिसाब रे से कोन करिवो स्टेट रो रोल टा रहुची किंतु पॉजिटिव किंतु स्टेट को से कहूची गोटे नेसेसरी भी मध्य से कहूची नेगेटिव सेंस रे मध्य कहूची सेति पई ताको हमें नेगेटिव लिबरलिज्म बोली कहूछु आ अदर सेंस रे हमें कोन कहूछु स्टेट को गोटे पॉजिटिव लिबरलिज्म माने कंटेम्परेरी लिबरलिज्म न्यू लिबरलिज्म को गोटे हमें पॉजिटिव भी कहि परिबा तो पॉजिटिव को सेंस रे हमें कहूछु पॉजिटिव लिबरलिज्म कहले से गोटे वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस कथा कहूची एलपीजी कथा कहूची लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जेमे लिबरलिज्म आसीबा द्वारा हमर ए तीनटी जिंस आस्तला 1991 रे जेते बेले हमर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हमर फाइनेंस मिनिस्टर थिले 1991 रे जेते बेले एलपीजी आसीला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आसीला सेते बेले से कोन करले स्टेट रो रोल टा आउट की एक्टिव करले तो स्टेट को गोटे पॉजिटिव हिसाब रे सेठी यूज करा जायतिला सेति में कंटेम्परेरी लिबरलिज्म और ताको न्यू लिबरलिज्म मध्य कुहा गला तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कंटेम्परेरी लिबरलिज्म सेमते मार्क्सिस्ट अप्रोच रे मार्क्सिज्म रो प्रोबेबल क्वेश्चन हे परिबो कि सबुठो इंपोर्टेंट टेंडेंस तार रहउची जोटा होची कि हमरो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होची सबुठो तांकर इंपोर्टेंट जिंस कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म केमितिया यूज हे पाला केमितिया सेटा हमर पॉलिटिकल ये रे यूज हे पाला तो सेटा गुटे हे परिबो प्रोबेबल क्वेश्चंस गांधीज्म रो रहउची हमरो गांधीज्म रो जो सब अप्रोचेस गांधीयन अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस रे गांधीयन अप्रोच टा केमितिया यूज होचे आ बेसिकली तार सोशल मूवमेंट्स व्हाट आर द सोशल मूवमेंट्स प्लेड बाय गांधीयन अप्रोच एंड व्हाट आर द बेसिक tenets of Gandhism like non-violence truth these are the basic tenets of Gandhism ए जिंस गुड़ा सब प्रोबेबल क्वेश्चंस रे आस्पेरियो तो हमें क्वेश्चन आंसर जहाँ को जहाँ डाउट होची क्वेश्चन आंसर पचारि परिबो जहाँ भी जहाँ डाउट होची क्वेश्चन आंसर पचारंतु
Yes. ओके नेक्स्ट क्लास पे किसी क्वेश्चन आंसर टी प्रिपेयर ହେଇକି ଆସିଥିବେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି क्वेश्चन आंसर सब नहीं ଆସିଥିବେ जो क्वेश्चन आंसर्स को हम लास्ट रे डिस्कस कर परिबा ओके नेक्स्ट क्लास रे देखाबा Okay, ma'am. Thank you.